ऑनलाईन फटवणुकीचे आणखीन एक प्रकरण उक्तडा राहिले. ही फटवणूक पैसे डबल वा ट्रिपल करता म्हणून सांगून जावना जाल्यार अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान जाल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयान हॉटेल वा विला बुकिंग करपाच्या नावान 4 जाणांनी सुमार 500 जाणांक लाखांनी रुपयांची तोपी घातली. देखिए, इसके अंदर जो हमने इनके कॉल रिकॉर्ड्स इनिशियली देखे हैं अभी, तो उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो फ़ोन नंबर्स थे वो सिर्फ ये कस्टमर्स को बात करने के लिए यूज़ कर रहे थे. तो उसके अंदर जितने फ़ोन्स हैं, ऑलमोस्ट वी आर एबल टू सी मोर देन 500 कस्टमर्स हु आर इन टच विद देम. एंड व्हाट वी हैव आल्सो फाउंड आउट दैट ये कस्टमर का और इनका कांटेक्ट तभी हो पाता था जब कस्टमर एक इनिशियल बुकिंग कर लेता था वेबसाइट पे जाके. So we feel that more than 500 people have been, they were in touch with them for bookings. How many of them actually made the payments is something which is still being worked on. But 500 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ये प्रॉपर्टी दिखाई और उनमें से बहुत ज़्यादा मात्राओं में लोगों ने इस पे पैसा भी दिया है. जो ट्रांजैक्शन हुई है वो वेबसाइट के थ्रू नहीं हुई है. There is a number of the person who is managing that property, because the rates which they were giving were so attractive. क्योंकि बाकी जगहों के रेट्स के मुकाबले में ये बहुत सस्ते में विलास दिखते थे और ये अलग अलग जगहों की फ़ोटोज़ खींच के जो विलास एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ यूट्यूब पे देख के, कुछ और कहीं और, कई बार गोवा के, कई बार गोवा के बाहर के, उन सब विलास की फ़ोटोज़ लेके एक ऐसा रेट देते थे कि कई बार कस्टमर उसके झांसे में आके फंस जाता था और इनको कॉल करता था कि हमें ये बुकिंग दीजिए. When they would start talking to the customer, they will give him an impression that if you do not pay us some advance money immediately, this deal will go out of your hand. The customer in large number of cases has ended up paying 10 to 20,000 rupees just to secure that villa. And he is then assured कि ये विला मेरा है करके. That is what their broad modus operandi was. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन 4 ताब्यात घेतले. सौरभ लाल दुसेजा म्हणटा ताका ग्वाल्हेर राजस्थानाच्यान, जाल्यार सय्यद अली, मोहम्मद फिरोज आणि मोहम्मद अझरुद्दीन ह्या 3 हैदराबादाच्यान अटक केली. अटक केल्ले 4 जाण अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नावान लोकांक ऑनलायन तोपी घालताले. हे 4 जाण खंय हॉटेलाच्या नावान ऑनलायन बुकिंग घेताले. गोंयान सवाय भितर रूम मेळटात म्हणून लोक भुलून रूम बूक करून एडवान्स पयशेय फारीक करताले. पूण गोंयान आयले उपरांत बुकींग केल्ले हॉटेलूय ना आनी रूमूय ना म्हणून तकलेर हात मारून घेताले. संबंदीत मनशाक फोन केल्यार फोनूय बंद. उपरांत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लोकांच्या लक्षात येताले. कांय जाणांनी जाल्यार पुलिशेंत कागाळय करूंक ना. पूण चंदीगडच्या पंकज धीमान ह्या पर्यटकान हे विशीं हंजून पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ताचे कागाळी उपरांत पुलिशेन सुत्रां हलोवन ह्या 4 जाणांक अटक केल्ली. These people used to dupe unsuspecting tourists by exploiting loopholes on renowned booking platforms such as booking.com. This present scam came to light following a complaint which was received through us through email by one Mr. Pankaj Dhiman. He is a resident of Chandigarh. He was defrauded of rupees 20,000 while attempting to book a property named Ruby Villa on booking.com. When he arrived at the location, he discovered that the villa did not exist. When we found this complaint, we had initially registered an FIR under section 318 subsection 4 of BNS at Anjuna police station. Thereafter, we were able to arrest 4 individuals. 3 of them were tracked down to Hyderabad and 1 was tracked down near Jaipur. During interrogation, the accused confessed to orchestrating the scam, and they also revealed their modus operandi. They have been identified as one Mr. Saurabh, who is a resident of Gwalior. Another Mr. Sayyid Ali Mukhtar, he is a resident of Hyderabad. One Mr. Mohammad Firoz, he is also resident of Hyderabad. And Mr. Mohammad Azruddin Saif, who is a resident of Hyderabad. Basically these people have had a history in Goa.
ऐसे नहीं है कि हैदराबाद में बैठ के इन्होंने ये सब प्लान बनाया। यहाँ पे इन लोगों के ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10 years they have been visiting Goa, doing small kinds of businesses in Goa. One of the person who we've arrested used to run a his father runs a photo studio in Kalangut. It's presently still going on. One of the accused we've arrested, he actually has a property, hotel property on lease. He is managing that property also. So ये लोग गोवा को समझते थे, गोवा में जो टूरिस्ट आता है उसकी साइकी को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टीज, किस तरीके के रेट्स पे कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।